So, good afternoon, everyone. My, as you know, my name is Arun. ठीक है, तो this is our lecture number 10 on electrostatics. ठीक है. In the previous lecture, we have seen the expression of electric field due to a linear charge distribution. Also, we have also deep down the statement for electric flux. What are the electric fluxes and how to calculate it? And when we are studying about the electric flux, we have also seen that we need an extra term, the extra physical quantity that require is the area vector. And we have also seen how to identify the area vector. What is the direction of this area vector? Okay. All of the phenomena we have discussed. So first of all, we will go through that. Then in today's session, we are going to derive the expression for continuous charge distribution we are going to do, but for ring and a line charge which is perpendicular to the flux. Okay. So electric flux, we all know that phi is equals to Es cos of theta. It is also be written as E vector dot S vector. That is why this flux is a scalar quantity. Okay. Now, you can also write the flux as E vector dot S vector. Next thing is where S vector is the area vector. We have also seen in the previous class in a detailed manner that how to find this area vector, how the flux dependent on the area, and this area is nothing but the area of surface over which the electric flux is passing through or the electric field lines are passing. Okay, so this is that particular area. Now what is the area vector? So that is the surface. These are the electric field lines passing through it, and the magnitude of area vector is S. And what about the direction? The direction of this area vector is always perpendicular to the surface. Or you can also say that it is a normal vector to the surface. Okay? So this is the direction of area vector. Now, this is the open area. This surface has two ends. Either the normal will go this way or this way. Okay? So based on the convention, we will take the positive one, this NK. And if this surface is closed, then the case we will discuss in the next slide. So if the electric field is non-uniform, then we will use this expression. We will calculate the flux for very small area, ds, and then calculate it over the entire surface. Okay? Integrate over the entire surface. This is for the non-uniform electric field. Okay? Now, area vector for closed surface. Suppose this is a closed surface. So we will consider a very small section over this surface. And the area vector is always normal, but you will have to take the normal outward, okay, which is coming outward to the plane. Okay, na? Because if this is a cuboid, let's say, if this is a cuboid, one of the possibility that the normal vector can go inside also, but conventionally in closed surface, we will take the area vector which is moving away from the surface. Outward normal we will consider as the area vector or the direction of area vector. Okay? So same thing is written here that unit vector in the direction of outward normal. Okay? So closed surface के लिए always take the area vector in the direction of outward normal. Got it? And then use the same expression. Same expression. Okay? I hope you got it. If anyone has any kind of doubt, you can ask right now. Now, electric field due to linear charge distribution. ये हमने कल ही पढ़ा था. So this suppose this is the line charge, positive line charge I have given, and I have considered a point P here. From the very end, from the first end of this linear charge, the distance of this point P is x naught. Okay? And we have considered a section over here
of length dx at a distance x. ठीक है ना? And because this dx section contain a very small charge dq, so we have calculated the electric field due to this dq charge, and then we integrated for the entire length. ठीक है? So that electric field is coming out as 1 upon 4 pi epsilon naught lambda L over x naught into x naught plus L, where L is the length of the linear charge distribution. And you can also write it as Q upon x naught into x naught plus L. Why? Because lambda here is the linear charge density, which is charge per unit length. So charge given is total is plus Q on the entire length capital L. So lambda को you can write as Q upon L. So Q को you can write lambda into. ठीक है? So that is why we have replaced this lambda L with the capital Q. So it is 1 upon 4 pi epsilon naught x Q upon x naught into x naught plus L. I hope this is clear to you all. Huh? If you have any kind of doubt, you can ask. Now, this is the second case of linear charge distribution itself. I will explain you each and every terminologies, each and every symbol that is used in this expression. So please pay attention to your screen. Okay. Now, in this scenario, we have taken the unit charge here. This is the linear charge distribution. But what the difference between the previous case and this case? In this case, the alignment of linear charge is horizontal. And in this case, the alignment of linear charge is perpendicular. Or in other words, you can say, in this particular scenario, we have considered the point along the axis of linear charge distribution. But here, we have considered this point P at the non-axial position of this linear charge distribution. ठीक है ना? Because the axis of this charge distribution is this, and we have considered a point P here. Now, suppose the length of this rod is L. Got it? Now, this end, if you connect it with this point P, you can clearly see this point is connected to point P, these white lines. So it is making an angle beta from this axis. This is x-axis and this is y-axis. Okay. Now, if you connect this one, let's say name them as A and B. So if you connect the end A with this point P, the angle made by the central line, this is the line which is passing through the centroid. Okay? Or maybe not from the centroid, but this is the x-axis. Okay? So x-axis say this end is making an angle of beta. This end B is making an angle alpha. You can easily see these are the angles, alpha and beta. Got it? Which means this is the extreme angle. अब जो कोई भी अलग एंगल होगा वो अल्फा और बीटा से तो कम ही होगा, बिकॉज दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गो बियॉन्ड दिस. ठीक है? एंड दिस at this end also, this is not go beyond the point A. ठीक है? So alpha and beta are the extreme angles. Got it? And what is this theta? This is the total line charge and it is a continuous charge distribution. अब continuous charge distribution से field का formula we do not know. ठीक है? What we know? We know the formula of electric field or the concept of electric field due to point charge. So what we have considered a very small positive charge section, this one, this blue color rectangle if you are seeing, this is a very small charge, which is distributed over a length of dy, because this is a vertical length, so I have taken it as y. And from the x-axis, from this axis, it is at a height of y. और कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? ओनली dy लेंथ.
dy इज वेरी स्मॉल लेंथ, सो चार्ज, कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, चार्ज स्टोर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, dq चार्ज, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस से दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा वेरी कर सकता है, इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट चार्ज हियर, if you consider this point charge here at this section, this theta will increase. And can anyone tell what is the limit of this theta? Maximum value of theta क्या हो सकती है? Can anyone tell what could be the maximum value of theta? Everyone. JNV Ramnagar, JNV Raichur, 12th science, JNV Shimoga, बताओ। देखो ये एंगल थीटा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन तक, और ये सेक्शन कहां तक है, ए पॉइंट तक है, और ए पॉइंट तक एंगल कितना है, बीटा। सो इस थीटा की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये डाउन, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, बीटा, ठीक है। थीटा कितना एक्सटेंड कर सकता है, बीटा तक। एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ यू सी इजिली, दिस कुड बी इजिली विजिबल हियर, इन द क्लॉकवाइज सेंस थीटा को इंक्रीज अगर मैं करूं, what can be the maximum possibility, it could be alpha, ठीक है। Got it? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद आएंगी और काम भी बहुत ज्यादा आएंगे, हाँ। नाउ अब ये dq चार्ज से इस पॉइंट p पे फील्ड क्या होगी, तो राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq, ड्यू टू चार्ज dq at point p is given by, is given by what, अब देखो चार्ज बहुत कम है, चार्ज इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल चार्ज है, तो फील्ड कितनी बनेगी, फील्ड भी बहुत कम बनेगी। सो वी विल राइट दैट फील्ड विल बी डीई, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, डी फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे रेडियल लाइन से। अभी ये आपको दिख रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी, नहीं, ये बहुत क्लोज है पॉइंट एक दूसरे के, बहुत क्लोज है, तो यही लाइन आपको दिखेगी, ये वाली थीटा वाली, ठीक है। ये डी थीटा तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है ना। नाउ सो इस पॉइंट चार्ज से फील्ड कितनी हुई, इफ सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज डी क्यू हियर एंड दिस इज द पॉइंट पी, अब इस पे फील्ड कैसे निकालते हैं, just connect the point P to the charge Q, and if it is negative charge, so field will be radially inward, and if it is a positive charge, field will be radially outward. So इसीलिए we have taken the field of dq charge here, this is the dq charge, this is dq, this one, and dq charge से field is away, away, ठीक है ना। Now this de is equals to k dq upon what is the distance between them, distance is small r square, k dq upon r square, so this is the distance, ठीक है ना, ठीक है ना। इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो मैंने दिखा रखी है, दिस इज स्मॉल आर, दिस वन, है ना, ठीक है, क्लियर है सभी के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, है ना, है ना। 12 साइंस, could you 12 please science, mute could you yourself, please mute yourself?
so that the echo will not create here. Just give me 2 minutes here. ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ तो डी हमारे पास आ गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डी किसकी वजह से है? ओके, एंगल वाला रिपीट, एंगल वाला रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अल्फा क्या है? अल्फा और बीटा एक्सट्रीम एंगल्स हैं। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां तक फैला हुआ है ना, वहां से अगर इस पॉइंट पी को कनेक्ट करेंगे तो व्हाट आर द एक्सट्रीम एंगल? ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस दीज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, but where the point charge is situated, where we have considered the point charge, that particular angle is theta. Clear? Now अब हमें क्या करना होगा? We will resolve this d. If this angle is theta, this angle must be theta. क्लियर है? अब क्लियर है आपको जेएनवी रायचूर? एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? If this angle is theta, this angle is also theta. So d will resolve in two component. First is this de cos of theta, and second is in vertical direction de sin theta. Clear है? In horizontal direction means in x direction it is de cos theta, in vertical direction it is de sin theta. Now we will consider the horizontal component of this line charge distribution and calculate the total horizontal distribution. ठीक है ना? बिकॉज अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसिडर करता हूं, अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसिडर करता हूं यहाँ पर, ठीक है, उससे भी फील्ड इसी तरफ आएगी, उसका भी एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में। अगर सपोज मैं पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसिडर करता हूं, उससे फील्ड इस तरफ आएगी डाउनवर्ड साइड में, लेकिन उसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, गॉट इट? सो कंपोनेंट of DE in x direction. So it will be DE, E of x लिख सकते हैं इसे, DE cos of theta। ठीक है, अब ये तो एक पॉइंट चार्ज से, टोटल पॉइंट चार्ज से निकालने के लिए पुट द वैल्यू हियर k dq अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है ना, अपने को dq की वैल्यू लिखनी है और cos थीटा की। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। देखो अब ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है डी क्यू, दिस इज डी क्यू। कितनी लेंथ तक है ये? डी वाई लेंथ तक है। अब लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना चार्ज है? डी क्यू। कितनी लेंथ पर है? डी वाई। सो वी कैन राइट दैट डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी वाई। दिस इज वी आर गोइंग टू यूज। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, देखो ये एक्स एक्सिस थी, ये पॉइंट पी था, पॉइंट पी का डी क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस था? वाई था ना, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? ए। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ए है, ये यहाँ पे पॉइंट पी से। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस वाई है, देखो ध्यान से वाई, और ये वाली डिस्टेंस क्या है?
आर। तो क्या मेरे पास एक ट्राइंगल नहीं आ गया? दिस इज ए, दिस इज वाई और दिस इज आर, और ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? Cos theta is base upon hypotenuse. Base is A, hypotenuse is Y. So it will return, sorry, hypotenuse is R, so it will return as A upon R. ठीक है। अब देखो जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आई थी, k dq upon r square into cos theta. Put it here that E of x is equals to k. What is the value of dq? Lambda into dy. ठीक है। And what is the value of upon r square into cos of theta? ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर। अब देखो एक चीज हो, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम थीटा के टर्म में डील कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइन द एंगल अल्फा एंड बीटा। ठीक है। सो वी वांट कि जो हमारा एक्सप्रेशन आए वो भी अल्फा और बीटा को इंक्लूड करे। ठीक है ना? गॉट इट? सो अल्फा और बीटा को इंक्लूड करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई tan थीटा इन दिस ट्राइंगल इटसेल्फ। अब अगर इसी ट्राइंगल में आप tan थीटा लगाओगे, so tan theta you will get as what? Perpendicular over base, which is y upon a। ठीक है। तो यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिली? You will get y is equals to a tan theta। Got it? So what we are aiming, we are replacing this dy। ठीक है ना? We are replacing this dy upon r square। Just a second। r square into a upon r। ठीक है। नाउ ex is equals to k lambda। पुट द वैल्यू ऑफ, अब देखो y हमारे पास क्या है? y is y equals to, let me change the color here, y is equals to a tan theta। ठीक है ना? और r को हम लिख सकते हैं a अपॉन cos ऑफ थीटा। cos थीटा a बाई r था ना? cos थीटा इज a अपॉन r। तो r को हम लिख सकते हैं a अपॉन cos थीटा। अब देखो y a tan थीटा है तो dy कितना हो जाएगा? dy will be, a is constant, differentiation of tan theta is sec square theta into d theta। ठीक है। now put the value, all the values here, keep cos theta as it is for now। ठीक है। ex will be k lambda into dy is a sec square theta into d theta divided by this cos theta will, if you take this cos theta down it will become 1 upon sec theta। So you can write it as sec theta into r square। ठीक है। now put the value of r। so r is nothing but a upon cos theta, which means a sec theta। so r square की जगह पे we could write easily that it is a square sec square theta। now this sec square theta will cancel out, a and a will cancel out with the a square। now the only remaining term that you have is ex is equals to k lambda a cos theta d theta upon, sorry, a down side में k lambda upon a cos theta d theta। ठीक है। this is the expression you have got।
Now, this is the time to put the limit here. So Ex would be K lambda upon A cos theta d theta. Now you integrate it. अब देखो इंटीग्रेशन करते वक्त ना you have to put the limits. Limit is, अब थीटा नेगेटिव में कितना जा सकता है? देखो जब भी आप थीटा के लिए लिमिट कंसिडर करते हो ना, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक दिस सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, और क्लॉकवाइज सेंस. क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मानो या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मानो. हियर आई हैव कंसिडर द क्लॉकवाइज सेंस एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस एज नेगेटिव. सो अब देखो ये बीटा किस डायरेक्शन में मेजर हुआ? बीटा इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, डाउन साइड आ रहे एंटी क्लॉकवाइज सेंस. सो द लिमिट वुड बी, माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, बिकॉज अल्फा तो पॉजिटिव ही गया. देखो थीटा को यहां से यहां जाना है, ठीक है ना, एंड लेट मी डू इट हियर. ये अपना थीटा है, ठीक है. थीटा को यहां से यहां मूव करना है. अब थीटा तो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस, है ना. एंटी क्लॉकवाइज सेंस वैसे कन्वेंशनली पॉजिटिव कंसीडर होता है और क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव. तो जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस मेजर कर रहे हैं और बीटा को तो हमने पहले ही, बीटा कैसे मेजर हुआ है? देखो नेगेटिव साइड में मेजर हुआ. सो दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर बीटा इज टू बी नेगेटिव एंड अल्फा इज टू बी पॉजिटिव, ठीक है. इट्स अप टू यू वट एवर द कन्वेंशन यू आर चूजिंग, ठीक है. सो वी विल मूव अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन कि डाउन ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव, ठीक है. नाउ Ex would be K lambda upon A, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा माइनस की प्लस, प्लस साइन थीटा, बिकॉज if you differentiate sin theta you will get positive cos of theta, which means integration of cos theta gives you positive sin theta. Now the limit is minus beta to alpha, so it will become e of x is equals to k lambda upon a sin alpha plus sin beta, ठीक है. Got it? So this is the value of x component of the electric field, ठीक है. Now what is the value of y component? Now same expression you have to use, same thing you have to do. y component of electric field, what it should be? Ey is equals to dE sin theta. देखो in the previous case we have put the values of cos theta in terms of cos theta, and when you put the value in terms of sin theta you will get here that finally when you want to integrate it you will have k lambda upon a as it is, multiply with sin theta d theta, and limits are again minus beta to alpha. When you do so, integration of sin theta is minus cos theta, so you will left with k lambda upon a cos beta minus cos alpha. So these two expression you need to remember. This is Ey, and for Ex it is k lambda upon a sin alpha plus
साइन बीटा। ठीक है, दीज टू आर द रियली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ अब इन्हें आप एक और तरीके से भी याद रख सकते हो। देयर इज अ वन मोर मेथड टू लर्न, रिमेंबर इट। सपोज दिस इज द लाइन चार्ज, ठीक है, and here the point P we have considered. So this component is perpendicular to the line charge. So you can consider it as E perpendicular. And this component is parallel to the line charge. So this component you can consider E parallel. So this EX is the E perpendicular. So you can also consider it to be E perpendicular. And this EY को you can also consider E parallel. ठीक है? Now, if alpha is equals to beta, then what will happen? बताओ, which component will vanish out? Anyone? बताइए। देखो आप लोग अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। You have promised me on the very first day that you will come in the full attendance. ठीक है, most of the student are absent today and most of you are not responding. That is also a very big concern from my side. So what about you, JNV Raichur? If alpha is equals to beta, then which component will vanish out? कौन सा component zero हो जाएगा? EY या EX? बताइए। It's a very simple question that I'm asking to you. Tell me, everyone. JNV Ramnagar, JNV Shimoga. Very good. Or you can also say that EY or E parallel, है ना? So this parallel component will vanish out. ठीक है? When alpha is equals to beta. Very good. So this EY or E parallel will become 0. And value of this EX or E perpendicular will become 2 times of K lambda upon A. And suppose alpha is equals to beta, very good, double it will become. Alpha is equals to beta and it is also equals to, let's say, 5. So this will become 2 lambda upon A sine 5. Now, the next case, when there is a infinite long line charge, ठीक है, लाइन चार्ज तो है, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है, बट बहुत बड़ा है, विच मीन्स ये एंड भी कहां चला गया, इन्फिनिटी पे, ये एंड कहां चला गया, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है ना? सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट? नाउ वी नो द एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, this is point P. When you connect these and you will get the value of alpha and beta. Alpha and beta are the extreme values. This is alpha, this is beta. Can anyone tell what would be the value of alpha and beta when this end is at infinity? Can anyone tell? JNV Raichur, JNV Ramnagar. Can anyone tell what should be the value of this alpha when this end goes to infinity? देखो, अगर ये इतनी लेंथ का ही होता, सपोज दिस इज अ नॉन लेंथ एंड दिस एंगल इज लेट्स से 30 डिग्री, अब मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये एंगल बढ़ जाएगा लेट्स से 60 डिग्री, और बढ़ा दिया और बढ़ जाएगा 75 डिग्री। अगर मैं इसे बढ़ाता ही चला जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री। ठीक है, एंड वो कंडीशन क्या है, इन्फिनिटी। तो जब भी कोई एंड इन्फिनिटी को टच करता है, द एंगल इट विल मेक इज इन्फिनिटी। तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू होगी,
alpha is equals to beta is equals to 90 degree. When you put the value of 90 in this EY, cos 90 will be 0. ठीक है, minus cos 90 again will be 0. So cos 90 will become 0. So this component will vanish out. Now, what is the value of sin alpha? Sin 90. Sin 90 will become 1. Or sin beta, beta is also 90 degree. So it will become 1 plus 1, which is 2. So E parallel component, which is EY, will came out to be as 2k lambda upon A. ठीक है, these formula or these expression will directly help you in the numerical part. And Ex or E perpendicular will become 0. ठीक है. Now what about the semi infinite wire? This is point P here, length is A. Semi infinite wire के लिए alpha is what? This is the angle of this extreme end. This is at infinity. Alpha is 90 degree, but beta is 0. क्योंकि बीटा तो स्टार्ट ही नहीं हुआ. So beta is 0 degree. When you put the value of beta 0 and alpha 90, so cos 0 will become 1, cos 90 will become 0. ठीक है, तो it will become 1 minus 0. So EY component or E parallel component will become k lambda upon A. Okay, k lambda upon, and similarly this Ex or E perpendicular will become what? Alpha is 90, so sin 90 will be 1, beta is 0, sin 0 will be 0. So this will also be same. So these both the component are equal to each other. Now there is a special case I will let you know. Suppose this is the line charge, ठीक है ना, and the point is not in the line of it. The axis is here, but the point that we are interested is here. So what we will do, we will consider कि ये जो लाइन चार्ज है ना, P पॉइंट तक ही एक्सटेंड कर दो इसे. This is line charge, but the point is here. So what we will do, we will draw an imaginary line and then connect it. ठीक है. So this angle is what? Alpha, but this angle now will become minus beta. Okay, so this is the special case of. ठीक है ना. Now move on to the next expression. Electric field due to ring. अब रिंग भी क्या है? रिंग इज ऑल्सो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आपके पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यू जस्ट बैंड इट, इट विल बिकम अ रिंग. So what is the expression of electric field intensity? Suppose this is the ring. These are the axis of the ring. This axis is the coming outward. ठीक है ना, इस रिंग से ऐसे बाहर आ रही है. This is the small line charge we have considered. इस लाइन चार्ज से this is the direction of electric field line at this particular point P. And here these are the axes. ठीक है ना. Suppose this is the what? We can consider it Z axis also. This is X axis. XZ axis भी consider कर सकते हैं और XY भी. It's up to you. So do not disturb the phenomena. Let's just consider this as X axis, this as Y axis. So this particular axis will become the Z axis. ठीक है ना. Now this charge is dq charge again. Got it? This length from the center of the ring to the point P along x-axis is, let's say, small a. Okay? And the radius of the ring is capital R. And this distance
from the point charge to the point P where we are interested in finding the field is small r. ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो कैसे करेंगे. This is also an angle theta here, so this angle would be also, sorry, this angle also would be theta. क्रिस क्रॉस एंगल है तो दिस वुड बी थीटा. अब इस dq चार्ज से ये फील्ड कितनी होगी, बहुत छोटी फील्ड होगी, de. अगेन इसके टू कंपोनेंट, de cos थीटा एंड दिस वन इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, de sin थीटा. ठीक है, अब देखो अगर मैं ये सेम dq चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर लूं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और इसे कनेक्ट करता हूं विद ऑल द पैरामीटर्स आर सेम, ए भी सेम है, आर भी सेम, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा. जस्ट टू शो यू आई एम रिमूविंग दिस पॉइंट, जस्ट टू शो यू, एंड बाय चेंजिंग द कलर ऑफ पेन यू विल गेट टू नो इजीली. एक कंपोनेंट आएगा ये, सॉरी दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. ठीक है, अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, सपोज दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. अब इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, लेकिन एक डायरेक्शन, एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई की तरफ आ जाएगा, डी साइन थीटा, विच मींस ये जो डी साइन थीटा पॉजिटिव इस वाले कंपोनेंट से आ रहा है, इस वाले पॉइंट चार्ज से आ रहा है. सेम चार्ज अगर मैं इसके डायमेट्रल एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूं, डायमेट्रल डिस्टेंस पे, तो उससे भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच मींस आधी रिंग से half of the ring will contribute in negative y and half of the ring will contribute in positive y, but the complete ring is contributing in positive x direction, which means the net component, this is de and this is de for this point. ठीक है ना, and let me now rough it off. या तो क्लियर है ना, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओनली रिजल्टेंट कंपोनेंट यू विल हैव इन द डायरेक्शन ऑफ x. ठीक है, सो आई एम राइटिंग द पॉइंट हियर दैट ड्यू टू symmetry of the ring, vertical component of the of electric field vanishes. ठीक है ना, वैनिश आउट हो जाएगा. ठीक है, नाउ सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे भी पता है कि ये टॉपिक ना थोड़ा बोर्डम क्रिएट कराते हैं ना, ये फील्ड को रिजोल्व करना, डिस्टेंस थीटा ये वो, है ना, तो इससे क्या आता है ना, थोड़ा बोर्डम आता है, बोर होने लगता है बच्चा यहाँ. ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, this will help you out throughout the journey of your 12th class, even in your examination, especially for NEET and JEE and JEE advance. तो यहाँ वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको किस वे में हेल्प करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते. तो दैट इज वाई यू हैव टू कीप पेशेंट, है ना, एंड बी एक्टिव, बी क्यूरियस. रिजल्टेंट, ये एक्सप्रेशन आप खुद से डिराइव करो, घर जा करके अपने रूम में जा करके, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है फॉर योर सेल्फ स्टडी, तो दीज एक्सप्रेशन यू विल ड्राइव योर सेल्फ ऑल्सो. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न. तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड is in E net is in EX direction and which is DE cos of theta. Now again DE को क्या लिखेंगे, पॉइंट चार्ज से फील्ड. अब तो ये क्लियर ही हो जाना चाहिए,
पॉइंट चार्ज से फील्ड लिखने के लिए क्या करते हैं, के वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाई व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज रेडियली, एंड दिस इज स्मॉल आर स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा. नाउ व्हाट इज द cos ऑफ थीटा? देखो ये डिस्टेंस हमने क्या ली थी, सपोज इसे x ही ले लिया, x डायरेक्शन में है तो x ले लिया, ठीक है ना. एंड दिस इज द ट्राइंगल इज फॉर्मिंग, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा? अब अगर सभी आप लोग क्लास में बैठे ना, तो जब भी मैं बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो सब एक साथ बोला करो कि cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r, जैसे हम बोलते हैं ना ऑफलाइन क्लासेस में भी, ठीक है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? x अपॉन r. वेरी गुड. सो k डी क्यू अपॉन r स्क्वायर इनटू cos थीटा इज व्हाट, x अपॉन r. अब देखो r को इन टर्म्स ऑफ नॉन वैल्यू लिख दें, ये डिस्टेंस आप इजीली मेजर कर सकते हो, दिस इज x, है ना, दिस इज रेडियस. सो r को इन टर्म्स ऑफ रेडियस और दिस डिस्टेंस x की टर्म्स में लिखा जा सकता है ना, वी कैन इजीली राइट इट. एंड हाउ? देखो, दिस इज द ट्राइंगल, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस r इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल. Base is x, perpendicular is r. So r will become square root of r is capital R square plus x square. अब फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला होगा k dq x over this will become r cube. r की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ. So it will become x square plus r square raised to the power 3/2, क्योंकि 1/2 तो पहले ही थी, 3 और मल्टीप्लाई कर दी तो 3/2. नाउ अब मुझे आप एक बात बताएं, दिस इज ई नेट. ई नेट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस ऑफ थीटा. एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा क्या आया हुआ था, इट इज के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू डी क्यू. अब मुझे आप एक बात बताइए बहुत समझदारी के साथ, क्या ये डिस्टेंस एक्सचेंज होगा अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूं, अगर मैं ये पॉइंट चार्ज डाउन साइड में कंसिडर करता हूं तो क्या ये डिस्टेंस एक्सचेंज होगा? अगर मैं पॉइंट पी को यहीं पे रखता हूं तो नहीं, एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है. अगर इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं एंड द रेडियस इज आर, सो ये वाली जो डिस्टेंस है जो यहाँ पे स्मॉल आर थी, ये भी तो स्मॉल आर ही रहेगी. सो फॉर ईच पॉइंट कहीं पे भी आप कंसिडर कर लो, ये जो कैपिटल आर है ये चेंज होने वाला नहीं है, स्मॉल आर इज नॉट चेंजिंग एंड एक्स इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, विच मीन्स in this expression this kx r square plus x square raised to the power 3/2, all of this quantity is constant. So what is remaining then, kx upon r square plus x square raised to the power 3/2, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू. अब देखो डी क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है. अब ऐसे पता नहीं इनफाइनाइट डीक्यू से मिलकर के हमारी चार्ज रिंग बनी है. अब रिंग पे जो टोटल चार्ज है वही तो इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू है, और रिंग पे टोटल चार्ज हमने कैपिटल क्यू मान लिया. सो ई नेट वुड बी व्हाट, के कैपिटल क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है. This is the final expression. And if it is asking what is the maximum value of Emax, तो maximum value होगी 2/3√3 KQ upon R square. इसके लिए मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूं अभी, बट हाँ 2/3√3 जरूर आता है. बट you can remember that Emax would occur at x is equals to r/√2 प्लस माइनस r/2. तो जब भी x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 होगी
तभी आपके जो ई नेट है वो मैक्सिमम। ठीक है, गॉट इट। नाउ you can also remember one expression, one very beautiful expression I am giving you in just last 2 minutes। ठीक है ना, तो इससे जो ग्राफ बनता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद कर्वीलीनियर। ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, आर बाई आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर बाई √2। अब सेम पॉसिबिलिटी क्या होगी, डाउन साइड में होगी। ठीक है ना, दिस इज ई मैक्स, गॉट इट। एंड इट इज, चलो ई मैक्स का एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं, 2/3√3 के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, दिस। नाउ अब अगर मान लिया मेरे पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना, इस तरह का एक अरेंजमेंट है। ये क्या है, एक चार्ज आर्क है। आर्क, रिंग को काट दिया कहीं भी किसी भी सेक्शन से, या कोई भी पर्टिकुलर रोड ली उसे थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, आर्क आ गई। तो आर्क से मेरे पास जो फील्ड बनेगी ई नेट, विच इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा, सॉरी इंटू साइन थीटा बाई। ठीक है, ये हमारी नेट फील्ड है, किससे, आर्क से। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट इट फॉर डिस्क। डिस्क से क्या फील्ड बनेगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इनकी डेरिवेशन चाहिए कि ये कैसे आया और डिस्क वाला कैसे आया, तो यू विल राइट इट इन द चैट बॉक्स, otherwise the lecture is being over and we will discuss this thing in the next class। ठीक है, so if anyone has any kind of doubt till now you can ask right now, otherwise the lecture is being over। Thank you so much guys for being attentive, take care of yourself, bye bye।